सोसाइटी में, हमारे समाज में लोग इतने स्लॉट्स बनाए थे ना कि लड़कों को लड़कियों के साथ होना है और लड़कियों को हम्म। सिर्फ लड़कों के साथ होना है, और लड़की ऐसी हम्म। होती है, वो सिर्फ ऐसे सुंदर कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, ऐसे ऐसे हम्म। चलती है, ऐसे भागती है, ऐसे ही बैठती है, ऐसे ही चलती है। हम्म। लेकिन कभी कभी हम्म। लड़कियां या लड़के भी अलग होते हैं। हम्म। और अलग का मतलब एग्जैक्टली। गलत नहीं है, अलग है हाँ। क्योंकि अलग है, और अलग फ्रॉम व्हाट हाँ। वी कंफर्म टू सोसाइटी एज। Calling Karan. Yes, you can gobble the entire pizza. Mirror भी share नहीं करना पड़ेगा, and no fighting for the AC temperature. Welcome, ladies and gentlemen, to the Singles Club. Today we're going to talk about flying solo. And what better day than Independence Day to talk about this topic? You know, जब हम किसी को रेस्टोरेंट में अकेले डिनर करते हुए देखते हैं या फिर अकेले मूवी देखते हुए, तो हम सोचते हैं, oh, he or she is so lonely. लेकिन they're just independent people यार. Many singles feel judged when they tell people they want to spend time alone. पर life हमेशा surround system के साथ amazing नहीं होती. If you're an independent soul who likes to fly solo, then ask me a question. Loneliness और independence में बहुत फर्क होता है. Singlehood is not about loneliness. It's about enjoying your independence. So instead of falling into the pressure trap कि यार मैं अभी तक single हूँ, सारे दोस्त डेट कर रहे हैं पर मैं नहीं, just enjoy the space around you. Abhi, who's calling Karan on this Independence Day special? Hello. Hi. Hi, Karan. This is Ashwin. How are you doing, Karan? Hi, Ashwin. Doing very well. Where are you from, Ashwin? I am from Kolkata. Ashwin from Kolkata. How are you doing? What's up, Ashwin? Talk to me. I'm fine. I'm fine. Karan, I had a query which I would like to share this with you. Yes. The thing is that I've been in a relationship for the past 10 years. Okay. Like we met in high school and then we started dating and now we're pretty much settled. Okay. Okay. So the thing is, right now what has happened is that my friends and my colleagues, they are pretty much single. And these are the friends that I've grown up with in school as well. Okay. Now, what I feel is I want the life that they are having right now, that the fun that they are having. I feel like I'm losing that bit of freedom and I'm losing the bit of life that they are having. Like I'll share an example with you. Recently, we've planned a all boys trip, foreign trip, and then I shared this with my girlfriend, and then she said, "Why aren't the couples going?" And then we had a talk after that. She wants herself to be a part of the plan as well. So I feel I'm losing a lot. I'm losing a bit out of the freedom. I feel a bit suffocated and everything. So Ashwin, I think, so I think what the problem is really in that you're missing space in your relationship. I think you need some Exactly, Karan. space, and I think that's a conversation you need to have with your girlfriend, because you can't have it both. See, if you were just saying that, "Arey, I want a single life, but I want to be in a relationship," that's like having your cake and eating it too. वो नहीं हो सकता, because when you're in a relationship, it's a different kind of commitment, and you do lose some of your, personal freedom, not freedom, but your personal space. But having said that, Right. the new age dynamism of a relationship is to give each other space, like not necessarily do everything together. Like you should have your nights out with your buddy friends. You should be able to maybe sit at home on your own and just watch Netflix, or maybe you should just Right. spend a day like with yourself, or maybe take a trip on your own or with your friends or whatever. Just not always be in each other's like faces, because what happens is that that kind of over meeting over everything, it leads to frustration, it leads to angst, it leads to fights, it leads to then all kinds of issues in your relationship. So I think you need to have a sit down with your partner and say that, look, I love you and you're pretty much the partner of the rest of my life, but I feel True. that if we need to keep this going in a healthy way, we need to kind of make space for each other. And otherwise, if it doesn't, the right thing to do is to make some ground rules, but that doesn't work because rules in a relationship just make it very stiffy and make it very severe. But just say I'd like to spend a trip with my friends. Maybe one day we should just not meet, and I'm not meeting anyone else. I'm just sitting at home. Give that distance in your close relationship. It's very critical sometimes to be distant in a close dynamic, because that's the only way you can keep it going and create a longevity in your relationship. Right now, what I think is the reason you're getting suffocated is because I think you're doing everything with her. If I'm right, you must be meeting her nearly every day or speaking to her nearly about 5 times a day, and you'll do everything Exactly. together. I am. That is not healthy. And I've seen many relationships go down a deep, dark path as a result of this. You have to do your own thing, because invariably what will happen is you will lose your friendships, because they will get fed up of Yeah. you and they will also move away, and you will be stuck
with just your partner who you will get frustrated with, resent, and then take it out on her, and she might take it out on you. So I think you need to have a solid chat about this. Give yourself space, create that space within your relationship. That is the solution to your problem. Yeah? All right. I wish you well then. I wish you well. Thank you so much, Karan. Thank All you the so very much. best. बचपन से हमें सिखाया जाता है शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो. सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, पर कभी-कभी बहुत जरूरी है. We'll continue talking about flying solo in a bit on today's Independence Day special. The dreaded single status can make the best of us feel really unworthy, but it has a deeper purpose. बस हमारे नजरिए की बात है. मिस्टर राइट और ड्रीम गर्ल ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम कि we forget to enjoy our own independence. Okay, now I have a message from a fellow single mate here, the bold and gorgeous BB of Sahab and the muse of gangster, Mahi Gill. Hi Karan, you're so good at being single. तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप क्या टिप्स देना चाहते हैं उन लोगों को जो सिंगल हैं, जो बोरिंग ना फील करते हों. Mahi, thank you very much for your question, and yes, I'm very good at being single क्योंकि मैं बहुत सालों से सिंगल रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने सिंगल स्टेटस के साथ. और जहाँ आपकी बात है, I'm very happy to know that you're single as well and you sound very happy about it too. तो बस अपनी लाइफ enjoy करो, just do all the things. क्योंकि क्या accountable रहना, why do you need to kind of have somebody in your life to share your happiness or your feelings with? You have your own thoughts, you have your own sense of self, and I think that's all you need. So just enjoy the confidence that your single status gives you, because trust me, from what I hear around me, you are in a blessed position. To all the singles, if you're single because you enjoy your independence, more power to you. But if you pretend to be single but deep down you want to be with someone, you gotta stop that. There's no shame in admitting that you want to be in a relationship. Alright, now, let's see who is calling Karan on this Independence Day special. Hi Karan, Ruchi here. How are you? Hi Ruchi, how are you? Where are you from, Ruchi? I am from Ahmedabad, Karan. Hi Ruchi, tell me what's up. So I'll tell you the situation. The चीज ये है ना कि आई एम अ वेरी टॉमबॉय टाइप ऑफ गर्ल एंड मुझे बचपन से नहीं, कॉलेज से आदत है भाई की बाइक पे घूमना, यू नो, घर पे हेल्प करना, सामान लाने के लिए. कभी कभी लेट नाइट भी हो जाता है, ठीक है, डूइंग ऑल दोस थिंग्स. अब ये नेचर की वजह से प्लस हैंगिंग आउट विद गर्ल्स और बहुत फ्री नेचर है, राइट, इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग. तो नेबर्स वगैरह काफी कुछ बोलते रहते हैं, राइट, कुछ ना कुछ कि कैसी है लड़की, देर से घूमती है, क्यों काम करना है. तो इसमें क्या हो रहा है, नाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप. तो काफी अच्छा चल रहा था. नाउ सडनली 2 days बिफोर मेरा बॉयफ्रेंड आके मुझसे पूछता है कि रुचि, आर यू अ लेस्बियन? आई एम लाइक व्हाट, कहाँ से आए? इट्स वेरी शॉकिंग. मतलब उसने कुछ चीजें सुनी मेरे नेबर्स से और कुछ परसेप्शन माइंड में क्रिएट. कोई इतना कैसे कर सकता है? हाउ डू आई ट्रस्ट समबडी, राइट? तो नेबर्स की बातों से अगर 2 साल का रिलेशनशिप इस एक ही चीज की वजह से कैसे बिगड़ सकता है, राइट? तो ऐसा लगता है कि यू नो सिंगल होना कभी बेटर था. काइंडली एडवाइस के सिचुएशन में क्या करना चाहिए करना. जस्ट बिकॉज अगर तुम्हारे आपकी फितरत में बीइंग अ टॉम बॉय है या ऐसे कैसे टॉम बॉय आपने अपने आप को ये लेबल दे दिया है, बट यू कुड जस्ट बी ड्रेसिंग और बीइंग इन अ सर्टेन वे. ये लेबल्स लोग देते हैं ज़्यादातर. डू यू फील लाइक यू हैव एनी काइंड ऑफ, आई एम आस्किंग यू पर्सनली, आप ऐसा लगता है कि यू हैव एनी काइंड ऑफ अ गे टेंडेंसी एट ऑल? नहीं, ऐसा नहीं है. सी, आई एम वेरी ओपन नेचर. आप नहीं, नेचर नहीं, कभी कभी ऐसे पार्ट्स को हम दबा के रखते हैं और यू नो इट, यू वी फील कॉन्शियस ऑफ एड्रेसिंग इट. तो ऐसे ही मैं, इसलिए आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग यू अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट इफ यू फील लाइक इट इज पार्ट ऑफ योर, यू हैव गिवन इट अ थॉट, देन दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर. लेकिन आपको लगता है कि नॉट एट ऑल, आई डोंट हैव अ गे टेंडेंसी एंड आई एम बीइंग जज्ड अनफेयरली बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी. तो आप एक ऑनेस्ट डिस्कशन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर लो कि जस्ट बिकॉज आई ड्रेस इन अ सर्टन वे एंड आई एम अ सर्टन वे, हाउ डेयर एनीबडी जज मी फॉर हु आई एम. और अगर आपका है, आपने सोचा है कि मे बी आई एम इंक्लाइंड टू विमेन, then you should give that a thought as well, because that is a whole altogether different conversation for you. Different dimension, yes. तो you should actually sometimes, कभी-कभी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में लोग इतने स्लॉट्स बनाते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों के साथ होना है और लड़कियों को सिर्फ लड़कों के साथ होना है, और लड़की ऐसी होती है, वो सिर्फ ऐसे सुंदर कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, ऐसे चलती है, ऐसे भागती है, ऐसे ही बैठती है, ऐसे चलती है. लेकिन कभी-कभी लड़कियां या लड़के भी अलग होते हैं, और अलग का मतलब गलत नहीं है, अलग है क्योंकि अलग है, और अलग फ्रॉम व्हाट वी कन्फर्म टू सोसाइटी एज. तो अगर आप ऐसी एक लड़की हैं जिसका इंटरेस्ट दूसरे लड़कियों में है,
That is allowed. Nobody stopped you, but you must be honest to Exactly. yourself. तो पहले आप अंदर में झांक के देखिए कि आप कौन हैं. And once you realize who you are, then you can address the situation head on. Completely understand. Yes. ठीक है? All right. I wish you well. Yes. I wish you well. Thanks a lot. All right. All right. So even if you are in a relationship, तुम अपना me time निकाल सकते हो. Let your partner know that early Saturday mornings are for your weekly bike ride or whatever it is that you enjoy doing independently. Ultimately, these little things that belong to only you will help you not become single again. Our love-hate relationship continues on Independence Day also. How ironic. All right, begin with the very, very controversial reverse rapid fire. Name a bachelor you are envious of. Well, I can't think of a name of anyone around me, but there is one eternal legend and the superstar of Indian cinema who is a bachelor. I'm definitely not envious of his status, but I'm really wondering that he is so gorgeous, so amazing, such a big star, and he's still single. Why? I would like to ask him. Complete this sentence. No one can mess with your... No one can mess with your individuality. Name a serial dater in Bollywood. Well, it's unfair to always name Ranbir in this zone. I don't think so. I think he's a very passionate young lad who's had some serious, solid relationships. So I can't name him, though the name pops up when this question comes up. So I'm going to pass this question. Would you rather be single or get married for the 5th time? Single, anytime. Who wants to be stuck in a marriage 5 times? Please, who's this crazy person? Who is almost single in Bollywood? Give us the breaking news. Ask me no secrets, I'll tell you no lies. मेरा love bias hamper for the most wicked सवाल जाता है to the person who asked me who is a serial dater in Bollywood. I gave a tentative answer. It was a yes and a no kind of an answer. I like that one. You get the hamper. Singlehood is all about freedom. It's Independence Day and we're talking about flying solo. Being in a relationship with just yourself can be fun. You don't need anyone else to validate your existence. On this note, ladies and gentlemen, cheers to your singlehood and जाने के पहले time to take the social media सवाल of the day. Manu from Amritsar asks, actually, Karan, मैं लोड नहीं लेता single होने का, लेकिन मेरा भाई बार बार कहता है कि तू लल्लू है इसीलिए सिंगल है. मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ही मस्त मौला रहना पसंद है, पर ये सब लोग मुझे लल्लू कहते हैं क्योंकि मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही. How to get a girl केजो सर? तो पहले मन्नू तुम अगर कहते हो तुम खुश हो अपने सिंगल स्टेटस के साथ, फिर कहते हो कि तुम लड़की चाहते हो, हाउ टू गेट अ गर्ल. आई एम श्योर अगर तुम सिंगल होना चाहते हो तो ये वाइब तुम सबको दे रहे हो. आई थिंक यू आर गिविंग दिस वाइब कि तुम बिल्कुल सिंगल रहना चाहते हो. तो कैसी मिलेगी तुम्हें लड़की अगर तुम कॉन्स्टेंटली ये पर्सनैलिटी एग्जीक्यूट करते हो या ये वाइब देते हो कि यार मैं सिंगल ही खुश हूँ, तो फिर कोई लड़की तुम्हें सीरियसली लेगी नहीं. तो थोड़ा पैशनेट बनो, थोड़ा रोमांटिक बनो, थोड़ा इंटेंसिटी अपना इजहार करो. टेल द गर्ल्स दैट यू मीट के मैं बहुत सीरियस, पोएटिक, रोमांटिक, आशिक इंसान हूँ, आशिक मिजाज इंसान हूँ. शायद अगर तुम ये पर्सनालिटी टाइप लोगों को दिखाओगे, लड़कियों को दिखाओगे, तो शायद तुम भी आशिक बन सकते हो. क्या पता कल हो ना हो. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और इश्क करना मत भूलना. बाय फॉर नाउ. लवली टू हैव मेट यू. Who in Bollywood is an emotional manipulator? Well, I won't say he's an emotional manipulator, but Ranbir Kapoor has a tendency of making me do things that I would never do, but somehow he gives this puppy face when he asks me for something and I'll end up doing it.